दरअसल दोस्तों 4 सितंबर 2023 को ओके यस यस हेलो एवरीवन वेलकम हेलो ऑल द बेस्ट इसरो आदित्य yes isro will succeed this time anirudh shinde let's go hello guys what is the time of actual launch it's 2:35:17 hours ist okay thank you aditya kar hello how are you man and pokla bengal hello welcome to the live event being telecast on my YouTube channel, the launch of LVM3 M4 Chandrayaan 3 mission. खाना खा लिया भाई ओके यस खाना खा लिया एक्चुअली वो थोड़ा सा एको था वो कम कर रहा था मैंने एक मिक्सर खरीदा है उसको मैं सेटअप कर रहा हूँ और थोड़ा सा बेस भी है मेरे आवाज़ में तो उसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ ओके आवाज़ अब अच्छी खासी आ रही है एनीवेज तो दरअसल आज लॉन्च है LVM3 M4 यानी चंद्रयान 3 मिशन का जैसे कि आप सभी को पता है और इससे पहले हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को उसके बाद उसके लगभग 40 लगभग 48 दिनों बाद हमने चांद पर लैंड करने का प्रयास किया था लगभग रात के 1 या 2 बजे चांद के सतह पर एक अनहोनी घटना हुई जिस अनहोनी घटना ने हम सारे भारतीयों का जो एक मूड था उसको डाउन कर दिया दरअसल मैं बात कर रहा हूँ विक्रम लैंडर के डिमोलिशमेंट की जो
फेल हुआ लैंड करने से। कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो? अरे सिस्टम नहीं यार, जुगाड़ू आइडिया है। दरअसल मैंने एक जस्ट मिक्सर लिया है। मिक्सर इन द सेंस ऑडियो इंटरफेस है वो। और मैं थोड़ा सा इसको फिल्टर भी कर रहा हूँ, मेरे आवाज़ को। मतलब फिल्टर सिस्टम अभी ऑन किया मैंने, इससे पहले ऑफ था। तो anyways, yeah, it's go for the launch, and lab known as launch authorization board has also given the clearance for the launch. And prior of that, the MRR, means mission readiness review, also gave the clearance for the launch of LVM3 M4. तो नमस्कार, शुभ दोपहर। मैं आप सभी दर्शकों का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 14 जुलाई 2023 एक महत्वपूर्ण दिवस है। हम सभी ने इसरो के अनेक मिशनों के बारे में देखा, सुना और जाना है। चंद्रयान 1 से शुरू करते हुए मंगलयान, चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 तक आज इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान 3 का प्रमोशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार के द्वितीय प्रमोशन मंच से किया जा रहा है। इसके साथ इसरो के तकनीकी प्रदर्शन मिशनों के श्रेणी में एक नवीन अध्याय शुरू होने जा रहा है। आज 14 जुलाई 2023 को GSLV मार्क 3 यानी LVM3 अपनी 7वीं उड़ान भरने के लिए सज्ज है। इस यान की पहली उड़ान 18 दिसंबर 2014 को LVM3 एक्सकेयर मिशन के साथ हुई थी। फिर इस यान की पहली विकासशील उड़ान ने GSLV मार्क 3 D1 ने GSAT-19 उपग्रह को 5 जून 2017 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा था। उसके बाद 14 नवंबर 2017 को GSAT-29 उपग्रह और फिर 22 जुलाई 2019 को भारत का गौरवशाली मिशन चंद्रयान 2, 22 अक्टूबर 2022 को वनवेव के 36 उपग्रह और उसके बाद 26 मार्च 2023 को फिर से वनवेव के 36 अलग अलग संचार उपग्रह। और इसी चीज को देखते हुए इसी कड़ी में एक नवीन, आप कह सकते हो, मील का पत्थर आज साबित होने जा रहा है। वो है LVM3 M4 यानी GSLV मार्क 3 का चौथा परिचालन उड़ान। What's the total cost of the mission? Nearly about 670 crores to 700 crores. Welcome everyone hereby from Satish Dhawan Space Centre, the launch base located at Sriharikota, the southern part of India. Expected time of liftoff is 14 hours and 35 minutes past at IST today from Shar, second launch pad at Satish Dhawan Space Centre. This is the fourth operational flight of GSLV Mark 3, also known as LVM3, and thus the launch vehicle is numbered as M4, and it will launch Chandrayaan 3, India's prestigious mission in elliptic parking orbit called EPO. The Chandrayaan 3's spacecraft integrated module weighs for 3,900 kilograms with the minimum life of one lunar day on Moon's south pole. The nominal EPO elliptic parking orbit for the mission is 36,500 kilometers in apogee, and the perigee of this orbit will be nearly about 170 kilometers. इस GSLV मार्क 3 की यह चौथी परिचालन उड़ान है, जिसे LVM3 के नाम से भी जाना जाता है, और लॉन्च वाहन को M4 के रूप में क्रमांकित किया गया है। और यह चंद्रयान 3 को इलेप्टिक पार्किंग ऑर्बिट या EPO में लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 यान का एकीकृत मॉड्यूल का वजन 3,900 किलोग्राम है, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा। ये यान एक चंद्र दिवस के न्यूनतम जीवन के साथ है। इस मिशन के लिए नाम मात्र EPO कक्षा 36,500 किलोमीटर की एपोजी और 170 किलोमीटर की पेरिजी अपेक्षित है। जरा आप कमेंट में बताना कि कौन कौन इस मिशन के लिए वेट कर रहा है 2019 से। वैसे मैं भी वेट कर रहा था इस मिशन के लिए लॉन्च होने के लिए।
Does it is right to say that it will land on South Pole? Yeah, probably, but technically no, because it will land on 70 degrees on South Pole, not totally 90 degrees. So not probably, yes, technically. Okay. ओके, आप भी आयुष वेट कर रहे थे। ओके, बेसिकली मैंने एक एनिमेशन बनाया है जो काफ़ी लोगों ने देखा। आज मैं फिर से आपको वो एनिमेशन दिखा रहा हूँ। आइए अब हम थोड़ा उस एनिमेशन के ऊपर बढ़ते हैं। मैं वो आपको एनिमेशन शेयर करता हूँ, आप ज़रा उस एनिमेशन का मज़ा लीजिए, क्योंकि आई गेस एनिमेशन इतना खास बना नहीं इस बार। लैंडिंग वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय इसरो। It will land roughly or softly because if high velocity exists, it will land hardly. Basically, first of all, you need to know what had happened actually with the lander, Vikram lander, Chandrayaan 2. So, if you know what had happened with Chandrayaan 2, then you can get all the points of Chandrayaan 3 which have been improved. First of all, that is the dispersion of engine. It has improved, and the central engine has been moved. It is not there in this basically design. And the second part is that basically this is an failure based design, not success based design. And launch of LVM3 M4 is scheduled for 150 hours IST for DD National. If you guys are looking for DD National, then yes, you can view this thing on DD National at nearly about 150 hours IST, which is also 1350 hours IST. So yes, the launch means the landing part is basically a rough part for ISRO this time, because there are few things to be yet to be settled down, like the shock absorbers this time and the landing legs. But they have strengthened it. If it lands at the higher velocity, then it can sustain it. This time they made it sustainable. So let's move on to the animation. First of all, okay, now I am playing the animation, and the with it we have the commentary also. How much distance does lander will travel on moon? Means what you're what you're asking, man? Lander or rover? I think you might be asking about rover. How much distance will rover cover on moon? Check your question, and then again. Okay. Let's move on to our animation. Sorry, rover. Okay, yes. Basically, rover will not go too farther, because we don't have that much of knowledge yet of moon. So yes, rover will be going farther from lander, but it will not go much farther. It will be staying in the field of camera. Okay, means basically all the cameras of the lander will can see the rover shot in the. So it will be in the field of view of a camera placed on the placed on the lander. So rover is not going much farther. And now yes, we are playing the minus 20 seconds. 18 seconds now. Minus अब आप 20 ध्यान से seconds. अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब आखिरी के 10 सेकंड बाकी हैं। अब मैं कुछ दिन के लिए अपनी वाणी को रोकूंगा, आप ध्यान से देखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट, Plus 5 seconds. दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 टन वाले मार्क 3 रॉकेट नौगन को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं।
सारे पैरामीटर्स जैसे कि घोषित किए गए थे उसी के पर चल रहा है रॉकेट। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आईआर का इंफ्रारेड कैमरे का व्यू भी हमारे सामने आए, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में ही बताऊंगा। जैसा कि अभी घोषणा की गई है, सारे पैरामीटर्स सामान्य हैं। The S200s performing normally, and on your screens, on the red is the plant trajectory and the blinking dots are the current position. L110 engine started. अभी अनाउंस किया गया है कि L110 जो कि हमारा दूसरा मुख्य रॉकेट है, उसका इग्निशन हो गया है। उसके दोनों इंजन प्रज्वलित हो गए हैं और इसके प्रज्वलन होने से हमको करीब रॉकेट S200 separated, performance normal. 131 सेकेंड पर प्रज्वलित किया गया था Closed loop और ये variance लगभग initiated. 195 सेकेंड तक After इतनी प्रण देता जाएगा। 10 seconds after the S200 separation, the vehicle is now under closed loop guidance. The L110 performance is normal. The L110 is a twin engine powered high thrust version stage with a specific impulse of 293 seconds. Now the heat shield separation will take place, and again, you from our videos on board, you will be able to Payload see the fairing heat shield separated. separation from the vehicle. अभी आपके स्क्रीन पे हीट शील्ड को मुख्य रॉकेट से अलग हुआ, उसका दृश्य आपने देखा। Beautiful view of the two halves of the fairing separating from the launch vehicle. L110 performance normal. L110 जो कि हमारा कोर रॉकेट है, वो सामान्य रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ में आगे के सैटेलाइट और क्रायो स्टेज। As I was mentioning, the L110 stage develops a peak Plus 4 minutes. steady state thrust of about 1700 kilonewtons together. The stage is 21.2 meters long and has an outer diameter of 4 meters. The L110 weighs about 130 L110 tons performance normal. and has 114 tons of liquid propellant consisting of N2O4 oxidizer and US-25 fuel. Now L110 is slowly reaching towards its end phase. Another 60 seconds for L110 to go, and as I had told earlier, the L110 was ignited at 110 seconds from the liftoff time, and it will be shut off by the guidance reaching the predefined targets for the L110 stage. Plus 5 minutes. We are launch plus 5 minutes and 5 seconds, and shortly the L110 will be shut off. जब रॉकेट का एल्टीट्यूड 170 किलोमीटर, अभी अनाउंसमेंट हुआ, रॉकेट क्रायोजेनिक रॉकेट प्रज्वलित हो गया है और उससे L110 रॉकेट उससे अलग हो गया है। The cryogenic stage has ignited, and I don't know whether you can hear the clappings of the working level scientists expressing their happiness on the ignition of the cryogenic stage. The performance of the cryogenic stage is looking normal at this stage. The intended path and the actual path falling exactly one over another. अभी जैसा कि अनाउंस किया गया है, तीसरे चरण का C25 क्रायोजेनिक के C20 इंजन को प्रज्वलित किया गया था। इससे करीब 20 टन का प्रणोद प्राप्त होता है और इसका विशिष्ट आवेग करीब 442 सेकेंड है। अब ये इंजन उपग्रह को इसकी कक्षा में ले जाएगा और ये लगभग 647.8 सेकेंड तक समाचार प्रसारित करता रहेगा और उस समय तक इसकी गति करीब 10.296 किलोमीटर की प्राप्त होगी। उसके बाद ये इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके 15 सेकेंड के बाद में उपग्रह उससे अलग कर दिया जाएगा। इस समय जो हम देख रहे हैं, The performance totally normal. The blinking dot is the current position of the vehicle. किलोमीटर है और Anytime the cryogenic stage shut-off command will be issued now. We are waiting for the announcement of the cryogenic stage shut-off. रेंज ऑफसेट डायरेक्टिव को तैयार है अनाउंस करने के लिए। उन्होंने अनाउंस किया, क्रायो इंजन शट ऑफ दिया, कमांड दे दिया। अब इससे 15 सेकंड के बाद में सैटेलाइट को क्रायो स्टेज से अलग कर दिया जाएगा। See carefully. Anytime you will see this satellite. या सैटेलाइट को सेपरेट कर दिया गया क्रायो स्टेज से। इसमें जो सैटेलाइट कैमरे से आप देख सकते हैं। Moving away from the
C-25 Over to stage. Mission Director. This is brought to you. तो फाइनली आपने एक एनिमेशन देखा अभी हमारे चंद्रयान 3 का कि किस प्रकार उसको लॉन्च किया जाएगा हमारे अर्थ से और फिर कैसे उसको उसके ऑर्बिट में डाला जाएगा, जिसके बाद वो खुद ब खुद प्रोपेल करेगा उसका जो Today is the historic and much awaited event of Chandrayaan 3 in elliptic parking orbit, from where it will be propelled to moon later. Chandrayaan 3 consists of a lander, a rover named as Vikram, and Pragyan. The rover Pragyan will come out of lander after lander attempts a soft landing on lunar surface. The soft landing will be done by August 2023, and Chandrayaan 3 will also consist of a propulsion module which also has a payload in it known as SHAPE, which will propel the lander module to lunar orbit. The final countdown for GSLV Mark 3 or LVM3 M4 mission commenced yesterday at 13:05 hours IST. This countdown was initiated following the clearance by the Mission Readiness Review (MRR) and the Launch Authorization Board (LAB), as the countdown for this mission was started at 13:05 IST yesterday. Now the countdown is been progressing. This was authorized after looking the mission readiness of the vehicle, satellite, launch vehicle, and other range support systems. We are nearly about 1 hour and nearly about 40 minutes away from launch. So yes, and again we have one more here, Raju, welcoming us. Hello Raju, how are you, man? GSLV Mark 3 की कुल 6 उड़ानें हो चुकी हैं और ये सभी उड़ानें सफल रही है. और ये सभी उड़ानें सफल रही हैं. दिसंबर 2014 को LVM3 एक्सकेयर मिशन से शुरुआत करते हुए GSLV Mark 3 ने अपनी this thing is going to moon. Wow, yeah, really it is going to moon, and basically it has 3 different parts in it. First is our propulsion module, then we have the first is propulsion module, then lander, and then in the lander we have a small rover which weighs for nearly about 22, yeah, it is weighs nearly about 27 to 28 kilograms. Yes, so this whole thing weighs for 3900 kilograms whole, the propulsion module, the lander, and the rover. So now we are going to launch it by 2 hours 35 minutes and 17 minutes past IST today. So now I am literally showing you a small curtain raiser video made by me. Okay, till then GSLV Mark 3 की कुल 6 उड़ानें हो चुकी है और ये सभी उड़ानें सफल रही है. दिसंबर 2014 को LVM3 एक्सकेयर मिशन से शुरुआत करते हुए GSLV Mark 3 ने अपनी विकासशील उड़ान डीवर ऑन D2 में सफलता प्राप्त की और उच्च भार को अंतरिक्ष तक ले जाने का प्रदर्शन किया. फिर 22 जुलाई 2019 को भारत का गौरवपूर्ण मिशन चंद्रयान 2 को भी GSLV Mark 3 LVM3 की सफलतापूर्वक प्रमोशन से किया गया था. उसके बाद GSLV Mark 3 ने 22 अक्टूबर 2022 को और एक ऐतिहासिक उड़ान भरी, जिससे वनवेव के 36 अलग अलग संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में अंतर्क्षेपित किया. और ऐसा ही प्रमोशन इस साल 26 मार्च 2023 को देखा गया था, जिसके द्वारा
वनवेब के 36 अलग अलग संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में अंतर्क्षेपित किया गया था। आज इस कड़ी में एक नया मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसरो के सभी केंद्रों से वैज्ञानिक अभियंताओं के योगदान से तैयार प्रमोचक यान सज्ज है चंद्रयान 3 मिशन को पूरा करने के लिए। इसे इस प्रमोचन यान की उल्टी गिनती लगभग 25 घंटे 30 लगभग 25 घंटे और 30 मिनट पूर्व प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान यान को पावर ऑन कर सभी जांच पूरे किए जा चुके हैं। तरल चरणों में भराव की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है और भराव को सुनिश्चित किया जा चुका है। सभी ट्रैकिंग स्टेशंस और संचार जांच, मिशन कंप्यूटर, वास्तविक समय तंत्र का आदि की जांच पूरी की जा चुकी है। अब कुछ अंतिम जांचों के पश्चात ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस यानी ALS को शुरू किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ अब मैं आपके सामने एक कर्टन रेजर वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आई होप आपको India has reached मज़ा आएगा उसको देख। एनीवेज विथ फुल क्वालिटी। Okay, I am Joy. Wow. Yeah, basically it is a very wonderful mission in the prospects of technology by the view of technology, because this type of missions is quite lesser in the world. And okay, I am now sharing the screen. Hopefully the screen will be visible now. Yeah. Some glitch, I think. Anyways, okay. Now the countdown for LVM3 Chandrayaan 3 mission is of dash hours long and began yesterday. Typically, during the countdown, the liquid propellants are served. In the GSLV, there are two liquid stages. First is cryogenic stage, and then second is our L110 stage. So probably there are two stages in GSLV which uses cryogenic propellant, and I am continuously trying to change the frame, but can't. Don't know. So hope so it works well. Okay, anyways, we'll play from here. I don't know what happened with that. I'm just updating it now. Streamlabs, Angari Ramanujan. Hi, welcome. How are you, man? How are you? Welcome. How are you? Okay. So I am trying to. Bhuvan makes. Hi. Okay. Hello, Bhuvan. How are you? Started so early. Yeah, man. I always start early because I get too much time. I am excited for the launch, and more than that, I am excited for the landing. So yes, quite amazing. Well, Bhuvan, you are going to stream on YouTube. By the way, you can stream, huh? As can you come now, if possible? Okay, if possible, then can you come on the stream now onwards? From now on,
No, not about stream. Okay, wait, I am just calling. While propelling the greater heights, ISRO, Indian Space Research Organization, has accomplished many milestones, and one of that is India's prestigious legacy of Chandrayaan. After the historic success of Chandrayaan mission, ISRO is geared to launch its Chandrayaan-3 on 14th of July 2023 at 14:35 hours IST, while India waits for this prestigious mission to create a new milestone. Chandrayaan-3's integrated module weighs around 3,900 kilograms with strengthened landing legs and shock absorbers. Now GSLV MK3, also known as LVM3, stands majestically on Satish Dhawan Space Centre's second launch pad to launch India's prestigious mission Chandrayaan-3. This integrated module is divided into three main parts: an propulsion module, and lander module, and an rover module. Propulsion module will propel Chandrayaan-3's integrated module to lunar orbit, and then lander module will get separated from propulsion module. After separation, lander will deorbit itself, followed by attempting to a soft landing on lunar surface. Wait and watch as nation soars for success. India has reached into the greater heights in the field of space. While propelling the greater heights, ISRO, Indian Space Research Organization, has accomplished many milestones, and one of that is India's prestigious legacy of Chandrayaan. After the historic success of Chandrayaan mission, ISRO is geared to launch its Chandrayaan-3 on 14th of July 2023 at 14:35 hours IST, while India waits for this prestigious mission to create a new milestone. Check your Gmail. Chandrayaan-3's integrated module weighs around 3,900 kilograms with strengthened landing legs and shock absorbers. Now GSLV MK3, also known as LVM3, stands majestically on Satish Dhawan Space Centre's second launch pad to launch India's prestigious mission Chandrayaan-3. This integrated module is divided into three main parts: and propulsion module, and lander module, and an rover module. Propulsion module will propel Chandrayaan-3's integrated module to lunar orbit, and then lander module will get separated from propulsion module. After separation, lander will deorbit itself, followed by attempting to a soft landing on lunar surface. Enjoy the stream. Wait and watch as nation soars for success. India has reached into the greater heights in the field of space. While propelling the greater heights, ISRO, Indian Space Research Organization, has accomplished many milestones, and one of that is India's prestigious legacy of Chandrayaan. After the historic success of Chandrayaan mission, ISRO is geared to launch its Chandrayaan-3 on 14th of July 2023 at 14:35 hours IST, while India waits for this prestigious mission to create a new milestone. Okay, miss, my audio wasn't audible. Hope now it's audible. I am checking. Okay. Okay. Yeah. Bhuvan. Okay. Hello, Bhuvan. Okay. Hello, Bhuvan. Welcome to Rocketry Dreamers YouTube channel. You can speak, man. You are audible.
Hello. Yeah, you are audible. Great, great. You are streaming currently or Yeah, stream start kar lo? straight on YouTube. You are on the line. You are on the Okay. line now. So your bandwidth is good, right? तो मतलब कुछ issue तो नहीं आएगा ना lag का? नहीं, not that. Perfect. ठीक है. अरे तो मैं क्या बोल रहा था? फोन से stream Uh, don't. डेस्कटॉप से पीसी से stream कर लो. I am asking that. Just open the mic. Don't open the camera. It's okay. वैसे भी जब इसरो का स्ट्रीम शुरू होने वाला है तो इसरो No, का no, स्ट्रीम I've started the mic. okay, yeah, I was just telling that just start the mic, don't start the camera because वैसे भी जब इसरो का स्ट्रीम शुरू होगा तो इसरो का स्ट्रीम फोर फ्रंट पे रहने वाला है. हाँ, got it. Yeah. बट वो जो तुम्हारे स्ट्रीम पे ऑडियो चल रहा है ना, हाँ. ट्राई टू म्यूट इट बिकॉज आई गेस इट विल बी बेटर इफ यू आर स्पीकिंग और लाइक एनी पीडीएफ जिस जो अपने पास शेयर करने के लिए लाइक इसरो का ब्रोशर आया है ना, उसको थोड़ा देखते हैं. ठीक है, इसको स्टॉप कर दो. सी व्हाट यू आर स्ट्रीमिंग ऑन द चैनल ना, नो वो जो वीडियो चल रहा है ना, rather than that you can stream this or see what we can otherwise hmm, अगर मतलब फोन से स्ट्रीम करो ना तो व्हाट वी कैन डू इज के मेरे पीसी पे मुझे कोड दे दो उसका स्ट्रीम की, पता है आपको यूट्यूब. नो इट कैन बी डन if you are using that software ना, कोई तो एप्लीकेशन होता है. if you stop streaming from there and I start streaming from here ना, तो अपन थोड़ा पीडीएफ वगैरह शेयर कर पाएंगे उनको, स्लाइड्स वगैरह. हाँ, ब्रोशर शेयर करना है. हम्म. ओके. ओके नहीं बराबर है, बट वो कैसा हो जाता है वीडियो से लोगों को पता नहीं चलता, फिर लगता है कि इट्स फाइन ना इफ आई स्पीक इन हिंदी. ओके. Yeah, thanks. No, I was just searching about those payloads. Mhm. So I found those interesting actually. Yeah, this is good. This is the brochure, right? The brochure, right? Yes, it is. But your phone is also visible. Okay, fine. No, just close that notification from Tata. Yes, it is. Your phone is also visible. Okay, fine. No, just close that notification from Tata. Let's see. Scroll a bit down. Like इसमें details है, but इतने details नहीं है जैसे I guess इसके पहले जो चंद्रयान मिशंस में था ना. हाँ, उतने details नहीं है. हाँ, मनूवर्स है. आई गेस इसमें आज ही अटेन करेंगे, राइट? जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है कुछ 100 या कुछ किलोमीटर्स बाय आज ही अटेंड करेंगे, राइट? और उसके बाद फिर लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कब तक होगा? लाइक धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, राइट? ओवर द कोर्स ऑफ द मंथ. Now we are on the. Okay, it's 40 days just. Yeah, 40 days. So now we are on the line. Okay. Scroll a bit down. Just okay. This one is okay. This whole trajectory is been showcased here. Yeah. Trajectory is fine, but it does not have some numbers now. हाँ. numbers वाला data है क्या देखते हैं? Numbers wala, then the mission sequence. This one, but it just not okay. But in our case, which there are I phases. guess ये ऐसा इसके लिए बनाया because
हाँ मतलब इसमें टेक्निकल डिटेल्स अवॉइड किए हैं फॉर अ रीजन आई गेस, या बिकॉज ये ज़्यादा जगह पे शेयर होगा, ज़्यादा लोग लिखेंगे, तो सिंपल रखा है इसको। या वो तो ओके ओके। अच्छा बाय द वे, नासा का जो डीप स्पेस नेटवर्क है ना, हाँ, उसमें डीएसएन। करंटली ये दिखा रहा है राइट, रिले पे चंद्रयान, हाँ डीएसएन पे। या ओके, दिस इज एन इमेज। यस, शेप के बारे में आपने वीडियो बनाया था ना, शेप पेलोड जो ऑर्बिटर पे जाने वाला है। हाँ हाँ हाँ, शेप। या नाइस, वो कुछ नया पेलोड है एक्चुअली ना, आई गेस एक ही नहीं, नया वो पेलोड है एक्चुअली वो। एक्चुअली उसे चंद्रयान 2 के लिए बनाया गया था आई गेस, पर वो उसको मतलब उन्होंने इस्तेमाल हम्म, नहीं किया। शेप ओके, पेलोड चंद्रयान 2 जस्ट पर लाइक था। द वेलोसिटी ट्रैकिंग कैमरा। हाँ, ओके ओके। चंद्रयान 2 अच्छा, पे उसको यूज नहीं किया, आई थॉट कि पूरा नया है। ओके बेसिकली ओके, उनको बट दैट इज इंटरेस्टिंग वैसे। या उन्होंने जस्ट ऑर्डर ही किया था। सोमनाथ सर ने कहा था एक पिछले इंटरव्यू में कि हमने वो जो सारे हम्म पेलोड से ना, मतलब उसके लिए जो कंपोनेंट्स वगैरह लगते हैं, वो सब हमने ऑर्डर किए थे, हम्म लेकिन वो सारे डेट से हम्म, पहले नहीं आए, या वो होल पेलोड उनके गिवन डेट से पहले नहीं आया, तो इसीलिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और फिर इस बार उन्होंने सोचा क्यों ना हम खुद ही बना देते हैं इसे। सो इट इज़ मेड इन इंडिया, इंडिजिनियसली डेवलप्ड। ओके ओके। हाँ 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 हाँ, ग्रेट एक्चुअली। यस। आई गेस इस टाइम का तो इवन द लैंडर इज आल्सो मेड इन इंडिया ओनली, बट द इम्प्रूवमेंट एज टू द इंजन ना, हाँ हाँ। बिकॉज फिफ्थ इंजन का बहुत वो कंट्रोवर्शियल सा था ना चीज, प्रॉब्लमेटिक था। यस पहले यस। चार इंजन से फिर पांच कर दिए, तो फिर से चार करना पड़ा। हाँ हाँ। And basically that micro star sensor for the altitude sensor is very interesting. If you look at here, I can I can zoom, है ना? हम्म, You see, we have altitude sensors. We have here three altitude sensors. First is CASS, known as CAS, IRAP, and then we have micro star sensor. This star sensor is basically very hilarious sensor in the case of altitude sensor. ओके And, ओके। and if you माइक्रो look, स्टार सेंसर इज इट? हाँ, and if we look down more, we have here some specifications of lander. The lander's life is of course one lunar day. The mass is 1349.86 kilograms, and all the technical details वगैरह है इसमें। मतलब ये कम्युनिकेशन कर सकता है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को और रोवर को। और फिर मतलब लैंडर की यस बात है। यस। और रोवर की बात है तो रोवर सिर्फ लैंडर को कम्युनिकेट कर सकता है। इसमें भी दो पेलोड्स है, एक LIBS और एक APXS जो होता है ना। दोनों स्पेक्ट्रोमीटर, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग हाँ है। हाँ। इनफैक्ट आई गेस लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर तो लाइक व्हाट आई कैन से मार्स में भी यूज हुआ है, मार्स बेस्ड रोवर्स में। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था। तो इनिशियली वो मार्स के लिए मेंट था, बट इसरो इज वन ऑफ द फर्स्ट स्पेस एजेंसीज जो कि चांद के ऊपर लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप को लेके जा रहा है, बिकॉज मार्स के ऊपर यूज हुआ है बट चांद के ऊपर कम हुआ है। एंड And alpha particle X-ray spectrometer also. yes, and these are the payloads. We'll go step by step to all payloads. First is you said about this Langmuir probe. I have not researched much about this probe. What is means what this does basically? What is Langmuir probe? We'll start from this. What is Langmuir probe first? Okay. So what I searched about this particular language purpose, because it is named by the scientist whose surname Langmuir. Basically, it is used to measure the electrostatic charges, is what I've said, or the plasma density. So जो प्रोब है उसका एक नोन हमें एरिया है। आप देखो वहाँ पे स्पीयर है, उसके ऊपर एक ऐसा बल्ब है और हाँ, पाइप जैसा है। in this तो image उसका ना। टोटल सरफेस एरिया इज मेजर्ड। यस, इन दिस इमेज दिस इज कंडक्टिव, मेड ऑफ मेटल। सो इसका टोटल सरफेस एरिया का हमें काउंट होता है जितना एरिया एक्सपोज है, और उसके बाद इसको इलेक्ट्रिकली इसके इसके अक्रॉस एक चार्ज इंड्यूस करते हैं। तो इसको आइदर पॉजिटिवली चार्ज करेंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज करेंगे। इस बॉल को ना। And if it is positively charged, हाँ, इस probe को Yes. with respect to the ground of the particular lander and effectively ground of moon, और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो static charge develop होगा, like जो charged ions है, मून का सूडो एटमॉस्फेयर है राइट। हाँ हाँ। मून के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, काइंड ऑफ आयोनोस्फियर।
उसमें के ये जो पार्टिकल्स है वो इसके अलॉन्ग अट्रैक्ट होंगे और उससे अपन हम इसका इलेक्ट्रॉन इसका मतलब व्हाट आई कैन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर कर सकते हैं या फिर प्लाज्मा डेंसिटी मेजर कर सकते हैं लूना सरफेस के ऊपर। ओके। बिकॉज मैंने वो जो पेपर पढ़ा उसमें इट वाज मेंशन कि लूना सरफेस हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अबाउट आई गेस 12 टू 15 वोल्ट्स। तो उतने का पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली लूना सरफेस पे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा। ओके। तो लाइक उसको मेजर करना है बेसिकली इससे। And this is useful, right? Because kaisa if we want to make future settlements on moon anytime in the future, हाँ। तो we need to know कि क्या इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, बिकॉज उससे इसका भी आइडिया लगता है कि सोलर इन्फ्लक्स क्या हो रहा है चांद के ऊपर, कि लाइक द सन मतलब वन ऑफ द रीजंस कि चांद के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा डेंसिटी है इज बिकॉज सन का रेडिएशन डायरेक्टली चांद के ऊपर बम्बार्ड होता है, बिकॉज चांद के पास कोई मैग्नेटोस्फीयर व्हाट आई कैन से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है एंड एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो डायरेक्ट लूना सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स बम्बार्ड होते हैं एंड इसीलिए ये चार्ज्ड है। तो हम अगर इसको मेजर कर सकते हैं तो हम द इम्पैक्ट ऑफ सन्स डायरेक्ट एमिशंस ऑन मून को मेजर कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से अपन प्रिकॉशंस बना सकते हैं ताकि वी कैन प्लान फॉर ह्यूमन मिशंस, लॉन्ग टर्म ह्यूमन मिशंस ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो आफ्टर अपोलो मिशंस जो नासा के हुए थे 1970s में, हम्म। उसके बाद दिस इज वन ऑफ द व्हाट कैन आई से वन ऑफ द मोस्ट important type of payload which is being launched, because चाइना का डेटा भी इतना कुछ पब्लिक नहीं हुआ है एंड देन या बेसिकली इसीलिए इसरो इज लुकिंग अप टू शेयरिंग दिस डेटा विद अ लॉट ऑफ एजेंसीज आल्सो। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोब। एंड अनदर थिंग अबाउट दिस प्रोब इज बिकॉज रिमोट सेंसिंग आपको पता है ना, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आसमान में से फोटोज लेता है, या that is the thing, but landing something on the surface of moon and then taking measurements has better sensitivity, and because ये चीज़ ऐसी है जो चांद के सरफेस से 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में ही है, तो इसके लिए चांद के सरफेस से ही मेजर करना पड़ेगा एंड फॉर दैट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द बेस्ट इक्विपमेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट, द मोस्ट एक्यूरेट वन बट द बेस्ट टाइप। तो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा मुझे लगा, जितना मैंने देखा ऐसा लगा मुझे। ओके। So when you are researched, basically Sorry? means you're well researched. No, no, not exactly well researched. I went through the paper and इतना मतलब मुझे लगा because the paper is very well written. Okay. ये papers मतलब technical details कम होती है इसमें, but mission objectives ज़्यादा होते हैं ना, because ये public के लिए release करता है इसमें। हाँ. हम्म। So basically it has 4 payloads. Lander has, I guess, 4 payloads. Lander has the Rambha Langmuir probe. Then we have Casestudy, known as Chandra's Surface Thermophysical Experiment. Then ILSA, Instrument for Lunar Seismic Activity. And then our spectrometer for Lunar Array, right? LRA. हाँ, So basically, it's which not one are you talking? passive payload, na? It's just a passive payload, na? Yeah, this laser retroreflector, right? Yeah. LRA. हाँ, that's a gift from NASA, as to say. Yeah. And Gift then from NASA because उसके लिए का ग्राउंड स्टेशन भी नहीं है हमारे पास। उसके लिए जो ग्राउंड स्टेशन लगेगा हाँ. टू रिसीव डेटा वो नासा के पास ही है। पर इसरो के ब्रोशर में वो दिख नहीं रहा जो LRA है, यानी रेट्रो रिफ्लेक्टर। हाँ, इसीलिए उन्होंने मेंशन नहीं किया बिकॉज़ वो उनका पेलोड नहीं है ना खुद का। हाँ. Okay. And इसीलिए वो लोग ने मेंशन नहीं किया। in the rover we have APXS, known as alpha particle excess spectrometer, and then LIBS, known as laser induced breakdown spectroscope. And in the propulsion model, if you look, we have shape payload, means spectropolarimetry of habitable planet Earth. In short, it will study and it will find some exoplanets or other exobodies where the habitable life is where it exists. Especially, it is made for that shape. Yeah, exactly. Precise. Yeah. And if we look in the some detail about the launch vehicle, then basically we have two S200 boosters which uses
200 tons of solid propellant, and L110 cryo stage, liquid stage. Sorry, this stage uses UDMH, known as unsymmetrical dimethyl hydrogen, and N2O for nitrogen tetroxide. This has two Vikas engines. This is a center core for GSLV Mark 3 or LVM3. And then top of that we have C25 stage, known as cryo stage, cryogenic stage, which uses LH2, or hydrogen, liquid hydrogen, and LOX, LOX, for liquid oxygen as fuel and oxidizer. So it's very complicated stage, but it's very reliable stage for me. What do you think, Bhuvan? Is it a reliable stage? C25, is it a reliable stage for ISRO? Hello, sorry. Is C25 a reliable stage for ISRO? Well, C25 has worked, right? Every time. Yes. I'm not aware as to the rocketry part, but I guess one of the most. I'm more interested in the electronics part, the Yeah, yeah. sensors part. So, Like I admire the rocketry part, but I don't understand much. okay. Like I understood the UDMH, the solid propellant wala thing. Uh-huh. Rocket engines are not my forte. Okay. Okay. Yeah. And the payload fairing, payload fairing's diameter is 5 meter ogived. Basically, it is the payload fairing which was used in GSLV F12, and that after that session we used this type of fairing, known as ogive shaped fairing, and then we implanted this fairing from GSLV Mark 3 or LVM3 to GSLV Mark 2. If you look at the orbit, the elliptic parking orbit or geosynchronous transfer orbit for that, then the apogee for the orbit will be 36,500 kilometers, plus minus we have accuracy of 500 kilometers. The perigee for GTO, this orbit, or EPO for this orbit will be, the perigee for the orbit will be 170 kilometers, and the accuracy for this orbit will be 3.5 kilometers plus minus in perigee. The inclination, Okay. the, you can say, in Hindi we say jhukav, or the inclination from the equatorial plane is 21.3 degrees. The argument of perigee is 178 plus minus 0.2 degrees. The launch pad is of course second launch pad, and the launch azimuth is 107 for this time. And again, here are few details about the stages. As I said earlier, that the solid propellant is filled in S200 boosters, which is HTPB, hydroxyl terminated polybutadiene. L110 stage, the core stage uses UDMH or UH25, दोनों एक ही है, unsymmetrical dimethyl hydrazine. Sorry, yes, unsymmetrical dimethyl hydrazine, and N2O4 means nitrogen tetroxide. Then in cryo stage we have LH2, liquid hydrogen, and then LOX, known as liquid oxygen. Yes. So if we go I guess downwards, the fueling part is done, right? yeah, fueling part is done. It I is, saw some clip. या वो 5 घंटे पहले ही, मतलब 5 घंटे जब बचते हैं लॉन्च के लिए, तब वो फ्यूल करना शुरू कर देते हैं व्हीकल. हाँ, वो, बिकॉज मैंने हाँ, बाकी कुछ रॉकेट्स में ऐसा देखा है कि आई गेस जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन होता है वो लोग बहुत लेट फ्यूल करते हैं, राइट? मतलब हाँ, they fuel up the tank just before the launch is going to happen, वो right? Because कोरोसिव हो जाता है hydrogen ना has got टाइम. the storage problems. यस यस, क्या हो जाता है? कोरोसिव Storage बेसिक. problem ऐसा कुछ है ना, हाँ like हाँ, because of the particle size, I guess. ओके, या Hydrogen being hydrogen. वो एक्सपांड होता है जल्दी, मतलब इन केस वो जल्दी बॉयल ऑफ हो जाता है, वो लिक्विड स्टेज में है ना, तो बॉयल ऑफ हो जाते हैं वो जल्दी. So that is why it can't But be, LOS में relatively कम problem है. हाँ, तो it can't be stored for the long time. हम इस 200 बूस्टर को लंबे समय तक रख सकते हैं, 15 साल तक रख सकते हैं, लेकिन लिक्विड को नहीं रख सकते. S200 is like solid है ना. हाँ, उसको वो कुछ तो नहीं. मतलब हमारे अभी जितने भी ICBMs होते हैं कंट्री के रेडी, similar tech. यस यस यस, Yeah, बट that's the reason those are always ready. यस But यस, it वो dangerous भी हो जाता है ना फिर solid के साथ. हाँ हाँ, यहाँ पे कि डेंजर. this can go south any time अगर कुछ भी, मतलब उसमें मैंने सुना कि लाइक स्टैटिक का भी रिस्क होता है कि जो एंटायर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर असेंबली होता है
उसमें दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई स्टैटिक ये ना है चार्ज हाँ, स्ट्रॉन्ग, हाँ, वो वरना ग्राउंडेड उससे भी स्पार्क जनरेट करके, हाँ, ग्राउंड उससे भी करना स्पार्क पड़ता है। जनरेट करके रॉकेट कैन गो बूम। यस, इतना यस, रिस्क है। ग्राउंड करना पड़ता है उस असेंबली के वक़्त। हम्म। तो मुझे वही क्वेश्चन था कि लाइक गगनयान में सेम रॉकेट क्यों मॉडिफाई करके ये यूज किया जाएगा, राइट? मतलब हाँ, या इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, राइट? हाँ, LVM3, हाँ, so that would be very risky, right? Just like SLS is also considered to be uh, uh, risky as for the solid rocket boosters part. yes, that is very risky, but it has that escape system, so that it is not much riskier Ah, due to that escape system agreed. Yeah, escape because system makes it. uh, And if I have to say this it like this way, maybe हम अभी ऐसा कभी सुनते तो नहीं है कि कभी गलती से कोई मिसाइल बूम हो गया, तो आई गेस प्रॉपर केयर इज टेकन एनीवेज, सो maybe the experience in handling solid rocket boosters is so much yes, that hey, it's better to use those because maybe those are more safer than a rocket engine which can fail, जो स्टारशिप के साथ हुआ, लाइक uh, कितने 7 इंजन तो लॉन्च के टाइम भी बिकॉज ऑफ द शार्पनल फेल हो गए, राइट? yes, yes. हाँ, सी So व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अभी 2 बजे का लॉन्च है ना, 2:36 इज द लॉन्च टाइम, राइट? yeah, 2:35, 2:35 और 17 सेकंड. Yeah. Okay, I was a minute late. So, what I'm saying is कि what we can do, फिर से इसका स्ट्रीम कर सकते हैं और एक जिसमें यू कैन चेंज द थंबनेल टू समथिंग लाइक मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि न्यूज़ वाले भी करते हैं स्ट्रीम बराबर, बट नॉट एवरीबॉडी वांट्स टू हियर न्यूज़ वाला स्ट्रीम, हाँ, तो हाँ, थोड़ा सा अलग सा अपन स्ट्रीम कर सकते हैं बिकॉज वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द से टेक्निकल डिटेल्स और डिस्कसिंग विद द पीपल हियर, राइट? oh वो yeah, यूनिक है, राइट? व्हाट आई एम सेइंग इज मेरे पास भी कुछ चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, लाइक अपन गूगल अर्थ में उसका लोकेशन देख सकते हैं लॉन्च का, वगैरह वगैरह, थोड़ा ये ऐसा एक्सप्लोर करते हैं। okay, व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू कैन शेयर विद द स्ट्रीम कोड, मैं मेरे कंप्यूटर पर से स्ट्रीम कर रहा हूँ, लैग नहीं आएगा okay, बिकॉज sure, थोड़ा अपने को पीडीएफ में बोर हो जाएंगे लोग, थोड़ा सा लाइक आई व्हाट आई माय पर्सनल सजेशन, लाइक डोंट माइंड okay, okay, okay. you, we can join on the same Google Meet. अगर बहुत टाइम के लिए कुछ स्ट्रीम चल रहा है ना, तो यूट्यूब उसको रैंक में नीचे ले जाता है, तो अपन बात भी करेंगे तो भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल पाएगा। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज अभी अभी भी लोग सर्च करना चालू कर रहे हैं ना, तो इट विल क्विकली कम अप, न्यूज़ चैनल से थोड़ा स्टैंड आउट कर, बिकॉज यार न्यूज़ चैनल का स्ट्रीम मतलब वो क्या ही बताते हैं, ऐसा बताते हैं कि बहुत ऐसा मसाला डाल देते हैं, राइट? वही, ओके ओके, व्हाट आई डू इज मैं अभी थोड़ा मतलब मेरा वाईफाई के दूर हूँ दूसरी जगह पे, तो मैं